So in last class we have discussed graphical method, how to solve NLPP by graphical method. Right? So we did two problems, how we can apply graphical method for solving NLPP. Now I am taking another method. So firstly I am considering constraint optimization problem when some constraint is given to you. So next topic is 27.4. 27.4 article from page number 827. So two method we have taken for constraint optimization and two method we have taken for unconstraint optimization. So first is your constraint. ग्राफिकल मेथड भी आपका constraint optimization ही था, उसमें constraints के भी थे. The first method is you have studied it in your advanced calculus also, if you remember, method of Lagrange multiplier. याद है method? ये था. Yes, method of Lagrange multipliers. This method we can apply for non-linear programming problem. So suppose if I am taking एक two variable की लेते हैं, फिर इसे जनरल लिखूंगा n variable में. Suppose you have a problem, some problem is given, minimize or maximize. नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है शायद. Minimize z or maximize z. This equal to suppose function of two variables की प्रॉब्लम अगर हमने if you have two variables. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? जी सर अब आ रही. ठीक, बीच में स्क्रीन जा रही है ना? चली गई थी सर, अब आ रही है. बीच में चली गई थी. यस सर बीच में चली गई. नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है. चलिए, subject to gx1 x2 is equal to 0. Suppose one constant is given to you and I am taking one problem in two variable and one constant is given. The constant will be given in equality. Equality में given होगा आपका, है ना? So what we do here, we take Lagrange multiplier. So I will consider, let L x1 x2 lambda is equal to f of x1 x2 minus lambda g x1 x2. ठीक. In some books they are taking plus x2 minus, वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसे हम सॉल्व करते हैं जीरो करके तो इक्वलिटी में आ जाता. So this is what I will consider x1 x2 which are the variable given to you, and one more variable I will take lambda and I will write that relation x1 f of x1 x2 minus lambda g x1 x2. This function is called Lagrange's function. This function is called Lagrangian function. And this lambda is called Lagrange multiplier with Lagrange multiplier. What we did here, we multiply this function with this constant with lambda and add कर दिया ना. Concept इसका ये था, if you remember जब प्रॉब्लम करते थे कि if you have suppose rectangular hyperbola, इस टाइप से प्रॉब्लम होती थी, and I want to find the concept of, इसमें gradient concept था, I want to find the minimum distance of this rectangular hyperbola, our hyperbolite from this function. So what we do, we take a ball and bubble and we start enlarging. So when it will touch first, that will be the point on the
hyperboloid which is touching this, है ना. तो क्या होता था at this point the gradient will be same. अगर इसको मैं sphere मान लूं gxy, suppose this is your fxy, तो concept was same कि here your gradient will be same at the point of contact, है ना. तो इसका gradient क्या हुआ del g, इसका del f. So what we do कि gradient will be same means they will be what, scalar multiple to each other, है ना. It was the concept if you remember in your advanced calculus. क्यों याद है किसी को? किसी को याद है? हेलो. यस सर। यस हाँ. सर। तो बशर आलम कहाँ है आज? बशर आलम नहीं आया आज, क्या बात? बोल. इससे पहले वाली क्लास में थे सर। अच्छा, हाँ, बताइए भाई बाकी लोग. तो ये कंसेप्ट होता था इफ यू रिमेम्बर, है ना. अगर आप देखना चाहे यू कैन सी इन योर एडवांस कैलकुलस में, रिकॉल कर सकते हैं कि ये हाउ दिस इज कमिंग, हाउ आई एम राइटिंग दिस. द कंसेप्ट वाज कि व्हेन यू हैव टू फंक्शन, वन इज कांस्टेंट, वन फंक्शन व्हिच यू वांट टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज, द कंसेप्ट वाज दैट at a point of contact their gradient will be same, so they will be scalar multiple to each other. उस scalar multiple को हम lambda से डिनोट करते हैं. ये lambda आपका क्या होता है? लैग्रेंजी मल्टीप्लायर. तो इसे मैं लेफ्ट में ले गया तो इसे हमने l x1 x2 lambda लिख दिया. ठीक है, here lambda is a variable. अगर मैं l के टर्म में लिख रहा हूँ तो आई एम कंसीडरिंग l lambda is a third variable. ठीक है, not constant here. So now this is a function. So the necessary condition now, the necessary conditions for maximize and minimize. Necessary condition means you have to find a stationary point. तो stationary point के necessary condition क्या होती है function of two variable में? बताइए. What is the necessary condition for finding stationary point? If you have a function of two variables, what is the necessary condition in differentiability for finding critical point? If you have a function y is equal to fx, तो necessary condition क्या है इसकी? सर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए. dy by dx should be 0, है ना. It will give you the critical points. इस concept को when we extend for function of two variables, so we find सर पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाए. it is the necessary condition for finding stationary points या stationary points कहते हैं. तो same thing here. Here you have a function L x1 x2 lambda. So the necessary condition for a function maximum minimum of function of f x1 x2 subject to the constraints g x1 x2 is equal to 0 is given by are given by. So here because I am taking this Lagrangian multiplier function, what I will do, I will take the derivative of this L. So the conditions will be del L over del x1 is equal to 0, del L over del x2 is equal to 0, and del L over del lambda is equal to 0. ठीक? Because I want to find maximum minimum but under this constraint. So I constructed one function Lagrangian function, and for necessary condition I will put first derivative to 0. That will give you the stationary point. That is a necessary condition. So del L over del x1 is equal to 0, del L over del x2 is equal to 0, del L over del lambda is equal to 0. Okay? Because I have taken two variables. 3 होते तो del L over del x3 आ जाता. Constants बढ़ेंगे तो multipliers बढ़ेंगे आपके. अगर two constants हैं तो you will take two multipliers lambda 1 lambda 2 and so on. So here it is the necessary condition. It will give you basically the points where function will be maximizing or minimizing. तो इसको अगर आप solve करें del L over del x1, this is your L equation. So what you will be getting? So we get del f over del x1 minus lambda del g over del x1 is equal to 0, है ना. ये इक्वेशन है आपके पास. Then del f over del x2 minus lambda del g over del x2 is equal to 0, and when you will take del L over del lambda तो क्या होगा?
These will treat as a constant. So this is 0. You get g of x1 x2 is equal to 0, है ना? ये तो कंडीशन आती थी if you remember. So this will give you, or you can say f1 is equal to lambda g1, है ना? f1 का मतलब क्या होता है? सफिक्स में 1 है, it means del f over del x1, differentiating with respect to first variable. f2 is equal to lambda g2 and g of x1 x2 is equal to 0. So this is the necessary conditions for finding stationary points and finding minimum. These conditions are called the necessary conditions. For maximum or minimum, max or min of f of x1 x2. Okay, so this is a necessary condition. Problem ले लेते हैं, two variables. Find the necessary conditions. यहाँ पे सिर्फ कंडीशन निकाल दी है इस प्रॉब्लम में. For NLPP ये प्रॉब्लम है आपकी. मिनिमाइज ऑफ z is equal to k x inverse y to the power minus 2. ये फंक्शन गिवन है k some constant x 1 upon x और y square इस फॉर्म में, subject to the constraint x square plus y square is equal to a square, where x y they are of course non-negative restriction is there, and hence find the minimum value, and hence find the minimum value of z. Okay, so it is a problem. Now what is this? It is NLPP or LPP? क्या कहेंगे इसके बारे में? So NLP. non-linear. Non-linear of course, quite obvious, क्योंकि 1 upon fraction में है तब तो it is fraction also non-linear है ना. कभी आप सोचो 1 upon x 1 upon y square, it is NLPP. If its degree is not 1, it is NLPP. So I will apply necessary condition. So I will, necessary condition means using Lagrange's method I will find the necessary condition. So firstly I will write the Lagrangian function. So the Lagrangian function, because it is two variable x y and only one constant, so the function will be L x comma y comma lambda ना. I will see how many constants are there and I will see how many variables are there. So two variables and one constant, Lx y lambda. So what will be the function? K times x inverse y minus 2 and minus, इसको g को देखो, इसे हम g लिख सकते हैं. तो अगर आप g लेंगे तो here you can write gx comma y is x square plus y square minus a square is equal to 0 है ना, because in the standard form our g was g is equal to 0. So if some constant is there, you can take on left hand side. So this is, so L x y lambda will be what? K x inverse f है ना, and minus lambda g x square plus y square minus a square. This is your L. Now necessary conditions के लिए I will find del L over del x is equal to 0. So how much it will be coming? बताइए. What is del L over del x? Anyone? Partial derivative with respect to x. Minus
माइनस के बाई रूट एक्स स्क्वायर। हाँ, -1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, के वाई विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट, सो माइनस के एक्स टू द पावर -2 लिख देते हैं, चलो, है ना, नो प्रॉब्लम। एंड हेयर माइनस ट्वाइस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, बाकी रेस्ट इज द कांस्टेंट्स। सिमिलरली del L over del y, then next condition, so you have -2 k x inverse y minus Y 3 minus twice lambda y is equal to 0, and third में g आपके पास del L over del lambda is equal to 0, that will be your g. This implies that x square plus y square minus a square is equal to 0, okay. So these 3 conditions you got here. So here you can find, देखो अब यहाँ से हमें क्या निकालना हुआ है, एक्चुअली हमें निकालनी होती है वैल्यू एक्स वाई लैम्डा की, क्योंकि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई लैम्डा विच विल मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द फंक्शन, है ना। तो बेसिकली तो हमें एक्स वाई निकालना है यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वही आपको ऑप्टिमाइज करेगी। तो आई वांट टू फाइंड द ऑप्टिमम पॉइंट। तो हियर यू कैन सी हियर it will give you how much if I am finding the value of lambda here. So here you got lambda is how much, 2 lambda is equal to, if you solve कर लें जरा इसे, कितना हो गया भाई, माइनस साइन में आ रहा है ये, माइनस के and x is cancel out because x can x cancel, so you got k, ये -2 था लेकिन तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो k x -3 y में, है ना, ये x मल्टीप्लाई यहाँ माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो दिस विल गो हियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 लैम्डा। और इससे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें के एक्स माइनस क्यूब, अब यहाँ पर वैल्यू निकाल ली हमें, लैम्डा को एलिमिनेट कर सकते हैं या तो, सो हाउ यू विल बी गेटिंग इट, दिस आई कैन गेट हेयर आल्सो। हेयर व्हाट इज 2 लैम्डा, here 2 lambda is coming how much, minus 2k x inverse y to the power -4, है ना। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेनली एक्स वाई निकालना है। सो यू गॉट दिस। नाउ इफ आई विल टेक both are the values of 2 lambda, so I can equate it. So how you will be getting, because both are 2 lambda, है ना, या तो डिवाइड कर दें या इक्वेट कर दें, तो you got minus k x minus, this implies that x minus 3y minus 2 is equal to minus 2k x inverse y minus 4। तो यहाँ पर यहाँ माइनस साइन भी कैंसिल, k is also cancel out, so you got, अब x y की टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, so here x it is what, here you have x minus 3, it is like this, 1 upon x cube y square is equal to 1 upon 2x y4, है ना। So इससे किसी एक वेरिएबल के लिए y स्क्वायर अगर मैं कैंसिल करूं तो you can got y square is how much, 2x square आ जाएगा, है ना, देखिए। So y is how much, plus minus, if I will try y, so y is plus minus 2x, ये x की वैल्यू निकाल लें, तो x is how much, y upon under root 2, है ना, ये एक वैल्यू निकल आई, देखिए रिलेशन निकल आई, इसे उठा के क्या रख देंगे, ये थर्ड इक्वेशन में, तो इससे आप क्या निकल आएगी, so you got, so this implies that x is equal to y upon root 2, इसे हमने पुट कर दिया थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालना, पुटिंग इन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वी गेट, रख दिए, जरा क्या आ रहा है बताइए जरा जल्दी से, पुटिंग इट हेयर, सो y स्क्वायर बाई 2 plus y square is equal to a square. So y is how much? बताइए, y is how much? बताओ यार, स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स है, 1 plus 1/2 3/2,
So it is 2/3. So how much y is 2/3 a. a? ठीक है, y आ गया. This is your y, that is a point. So x is how much? X was how much? Y by root 2. So y by root 2 means 1 by root 3a. ठीक है. So these are the point which will give minimize the function. यहाँ पे direct जो points निकल के आते हैं, that will be the point which will minimize the function direct. ठीक है. So hence this is the point and minimum z is how much? क्या वैल्यू थी? k फंक्शन था आपका k x inverse y minus 2. That means you can say k upon x and y square. So how much it is coming? Putting the value, so it is coming 3 root 3k upon twice a cube. So it is the value, the minimum value of the function. Okay. Now I can generalize this concept for more than one variables and more than one constraints, है ना? Means general non-linear programming problem के लिए. So concept is simple. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. Necessary condition for GNLPP. Necessary conditions for GNLPP. General non-linear programming problem. Okay. Suppose you have problem P से denote कर रहे हैं. Problem is suppose max or minimize z is equal to, I am taking now n variables x1, x2, xn subject to the constraints, and suppose I am taking some m constraints. तो उसे मैं gi x1, x2, xn is equal to and ci ना, ये constraints है. Where xi greater than equal to 0 and I is suppose running 1 to m. Okay, and I am taking in general they are less than number of variables. So ये m constants है ना, g1 x1 x2 is equal to c1, g2 x2 x1 xn c2 and so on. These are m constants basically. So here the Lagrangian function will be what? So the Lagrangian function is L of x1, x2, xn and अब लैम्डा कितने होंगे भाई? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा m, and जितने constants उतने multipliers. This will be what? F of x1, x2, xn minus क्या होगा बताओ? बताओ भाई. लैम्डा 1 lambda gi g लैम्डा जी, लैम्डा 1 g1 लैम्डा. देखो अच्छे से एक चीज और है यहाँ पर, इसको हम बेसिकली माइनस साइन, क्योंकि इसे लेफ्ट में लेके सॉल्व एक वो लिख लेंगे यहाँ पर आप. तो अगर कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड में है तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक लेट hi x1 x2 xn, इसे hi से डिनोट कर देंगे. क्या होगा? gi ऑफ x1 x2 xn माइनस ci इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसे इधर लेके माइनस करके लिख दिया बस कांस्टेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में. फॉर ऑल I is equal to 1 to m. So now you will take h1 lambda 1 h1 lambda 2 h2. So can I write this? Summation में लिख सकते हैं क्या? माइनस कॉमन ले लें तो summation I is equal to 1 to m lambda I hi x, ये लिख सकता हूँ क्या? hi x का मतलब वही x1 x2 xn. Can I write this? yes sir. है ना, क्योंकि आपके पास जितने लैम्डास है उतनी बार यू विल बी एडिंग. सो माइनस साइन आउटसाइड, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 h2 लैम्डा 3 h3 एंड सो आई कैन राइट दिस. सो दिस इज द जनरल. या अगर मैं x पॉइंट को इसको अगर मैं x से नोट कर दूं तो इन शॉर्ट आई कैन राइट लाइक दिस आल्सो. L of x, लैम्डा इज इक्वल टू fx माइनस
summation I is equal to 1 to m lambda I and इसे h ले लिया हमने, तो h लिख दीजिए hi x. Here x means x1 x2 xn है ना, यहाँ x सिंगल पॉइंट नहीं है, ये xn Rn का पॉइंट है, तो x just the notation here. This belongs to Rn. So you can write in this way also, fx minus summation lambda I hi. So this is the Lagrangian function, and the necessary conditions are so you will have to differentiate it. तो अगर मैं in general इसे इंडेक्स में लिख दूं तो del L over del x कितने हैं जी, 1 to n है, तो I can write suppose del L over del x j is equal to 0 है ना, and del L over del lambda I is equal to 0. क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो differentiate when you will differentiate partially, तो x because x is n variable, so I can write xj, j is 1 to n and i's are 1 to m. तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, m plus n है ना, कंडीशन कितनी बनती है, जितने कांस्टेंट और वेरिएबल्स, यहाँ 2 + 1 3 कंडीशंस थी, 2 वेरिएबल 1 कांस्टेंट. Here you will be getting total m plus n equations. In m plus n equations को सॉल्व करके I will find my points. Clear? Yes, sir. एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसे, more than 2 variables. Suppose I am taking 3 variables and 2 constants. One problem I am taking here. Obtain the necessary conditions. Obtain the necessary conditions for max of z is equal to x1 square plus 3x2 square plus 5x3 square, subject to the constraints x1 plus x2 plus x3 is equal to 5x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 5 x1 x2 x3 greater than equal to. यहाँ पे सिर्फ हमें नेसेसरी कंडीशन निकालनी है. जैसे कंडीशन पूछी जाएंगी वहाँ पे आप कंडीशन लिख देंगे, जहाँ पॉइंट अगर वैल्यू पूछी है तो वहाँ पे आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. ये प्रॉब्लम आपके पेज 829 पे गिवन. So here firstly I will write the Lagrangian function. बताइए भाई, what is Lagrangian function? Anyone? क्या ले L of x1 x2 x3 and x1 x2 x3 lambda. कितने, एक ही लैम्डा आएगा, 2 आएंगे ना, 2 कांस्टेंट. Yes sir, yes. है ना. So this will be what, f of x1 x2 x3 minus summation I is equal to 1 to 2. दो ही है बस, या तो ऐसे लिखते हो डायरेक्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख सकते हैं आप. लैम्डा I h I x1 x2 x3. ठीक है, h का मतलब क्या है यहाँ पे, जस्ट टेक दिस -2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, वही h है. So this is the condition. So now I will find the conditions, necessary conditions. So first is del L over del x1 is equal to 0. So del L over del x1 means f is this. So this is your f है ना, जब z होता है यही f होता है आपका, इसको f मानते हैं जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना. So del L over del x is how much, 2x1 minus, अब यहाँ lambda 1 lambda 2 2 है, तो this is your h is what, minus lambda 1. h क्या है यहाँ पर, h1 is
x1 plus x2 plus 3x3 minus 2 is equal to 0, and h2 x1 x2 x3 is 5x1 plus 2x2 plus x3 minus 5 is equal to 0. Okay, so 2x1 minus lambda 1, and this how much, del h over del x1 है ना, 2 है ये, तो del h1 over del x1 is how much, क्या है भाई 1 minus lambda 2 del h2 over del x2 is del h2 over del x1 5 is equal to 0. Okay, क्लियर है? ऐसे ही Yes, sir. del over del x2 is equal to 0, how much बताओ जरा जल्दी से. 6x2 हाँ, और plus 1. माइनस साइन है, माइनस lambda 1 and lambda 1 into 1 1 तो 1 लिख दिया, चलो माइनस minus lambda 2 into 2. 2 lambda 2 is equal to 0. Then del over del x3 is equal to 0. So it is how much? 10x3 10x3 10x minus minus 3 3 lambda 3 lambda 1 and plus lambda 2. minus lambda 2. is equal to 0. ठीक, then del L over del lambda 1 है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल्स आपके लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स. So del L over del L1 में यही इक्वेशन आ जाती है. Yes. x1 plus x2 plus 3x3 minus 2 is equal to 0. And next del L over del lambda 2 is equal to 0. So this implies is equal to 0. This implies that the last equation 5x1 plus 2x2 plus 3 plus x3, sorry, plus x3 minus 5 is equal. So these are the necessary conditions. ठीक है, these are the necessary conditions for finding LPB. अब यहाँ पर अगर यहाँ पे सॉल्व करना होता, अगर फाइंड होती फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो क्या करते फिर? वी विल बी सॉल्विंग दीज 5 इक्वेशन. सिस्टम इक्वेशन बना आपके पास, देखिए, है ना. वी विल सॉल्व इट एंड वी विल फाइंड x1 x2 x3. इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा हमें अगर सॉल्व करने की. यहाँ पर सिर्फ कंडीशन पूछी थी, आगे प्रॉब्लम लूंगा मैं, वेयर वी विल बी सॉल्विंग इट. हियर इट इज दे आर आस्किंग जस्ट finding the necessary conditions. So these are the necessary conditions in the problem. इसमें I think value नहीं पूछी है, हाँ यही है. So this is the necessary condition. Now when it will become sufficient? When it will become sufficient condition. So next we have sufficient condition. Okay, sufficient conditions for GNLPP. General लेंगे डायरेक्ट with m less than n, m constants है आपके less than n. तो what is the sufficient condition? So necessary condition हमारे पास तो मालूम ही है. यहाँ पर some more restriction I will be considering, and then I will see that when it will be sufficient. So टाइम कम है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में कल, वरना मुझे बीच में ब्रेक करना पड़ेगा बेकार, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना. ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन आई विल एक्सप्लेन इन टुमारोज क्लास. इस पे 1-2 मोर प्रॉब्लम्स यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ. इस पे पेज 830 पे या 31 पे देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम्स है. यू जस्ट ट्राई सम प्रॉब्लम्स फाइंडिंग नेसेसरी कंडीशंस. ठीक है, इसकी बुक की सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको अभी नहीं भेजी है, आई थिंक, या दे दी है? सर सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी, खाली नोट्स भेजे हैं सर 2. हाँ, अच्छा. हाँ, तो इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी देखूंगा. तो सॉफ्ट कॉपी आई विल सेंड यू. देयर यू कैन सी द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम 833 पेज पर है, नॉट 30. 833 पे पेज पर कुछ प्रॉब्लम्स है इसकी. फाइंडिंग द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस. ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हैं. 2, 7, 10 है,
2 7 11 2 7 14 ये कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिएगा, देन आई विल सेंड यू द कॉपी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर, ओके सर। चलिए फिर tomorrow I will continue with sufficient conditions. Okay.